If you are preparing for NEET, you need to know these few things that will make your preparation way more easier. Hey guys, I'm Radhima. Welcome back. Today we are talking about things nobody tells you about NEET, and if you are a NEET aspirant, make sure to subscribe because I've got a lot more videos like this coming. Let's get into it. My expectations versus the reality of NEET prep. तो जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था आई थॉट कि अगर इफ़ आई स्टडी फॉर मोर आवर्स my scores would increase and improve, but that's not how it works. Reality is that number of hours is not the only thing that matters. How you study matters more than just hours. तुम अपने डेस्क पे घंटों बैठ सकते हो and still after getting up you might not remember anything that you've studied. Especially जब तुम उसे passively read कर रहे हो या lectures watch कर रहे हो. So, without actually testing yourself, you cannot come to a conclusion. And this is where I learned that hard work and smart work actually have to go together. Hard work needs the right strategy too. Don't forget to like this video. I used to feel that if I'm studying consistently and I am studying for hours, apparently, the results will increase. But NEET isn't just about कि तुम कितना पढ़ रहे हो. It depends on what you are studying and how you're actually revising it, and whether you are able to actually recall it in a test, because that's what matters at the end of the day. So instead of just counting the number of hours, start paying more attention to whether those hours are actually productive or not. There was another thing that I seriously underestimated: how quickly the months disappear. तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पूरा 1 साल है या 1.5 साल है या 2 साल है, and you feel like you have so much of time, and you keep thinking कि मैं इस चैप्टर को या इस टॉपिक को I'll revise later, I'll do it later, I'll study it later. But suddenly when you look at the calendar and you realize कि तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है, and that's when I'll do it later वाला thing and factor becomes your biggest backlog. Comment down below if you can relate to it. अब connecting to my third point कि you don't have plenty of time, ये भी बहुत सारे लोगों को रहता है कि हम अपने वीक टॉपिक्स या वीक चैप्टर्स बाद में करेंगे. अगर सपोज वो बीच में बैकलॉग बन गए हैं देन वील फिनिश इट टुवर्ड्स द एंड, बट डोंट डू दैट बिकॉज वो भी फिर बैकलॉग ऐसे पाइल अप होता है एंड लास्ट में चीज़ें करना बिकम्स मोर डिफिकल्ट. सो डोंट डू दैट. सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ दैट मेड सेंस टू यू. ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो if you relate to this. So start revising alongside with your preparation instead of treating revision like something that you would do it at the very end, because revision should have started much earlier. जैसे ही तुम chapters ख़त्म कर रहे हो, जैसे तुम topics ख़त्म कर रहे हो, start revising it and do not leave it for the end, because एंड में रखोगे बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा. Quick reminder, if you are enjoying the video, don't forget to like and subscribe and comment down below which video you want to see next. I've got a lot more videos coming, so stay tuned. अब even I used to feel कि one bad mock test does not really matter. It has happened. ऐसे टेस्ट होते रहेंगे, ऐसे डिसअपॉइंटमेंट्स आती रहेंगी, डजंट रियली मैटर, वी जस्ट मूव ऑन. बट दैट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू. एक बैड मॉक टेस्ट कैन टीच यू अ लॉट इफ़ यू एनालाइज इट करेक्टली एंड यूज इट इन योर नेक्स्ट टेस्ट. In that way you can improve a lot. So
अगर एक बैड मॉक टेस्ट हुआ है, डोंट टेक इट लाइटली, डोंट अंडर एस्टिमेट इट एंड यूज़ इट फॉर योर बेटरमेंट। एंड हमेशा हर किसी को अपने को किसी और पीयर्स से कंपेयर करने में थोड़ा मज़ा नहीं आता है, बट every one of us feels like comparing ourselves to our friends, and we feel like everyone around us is progressing and why am I not able to do it? But तुम सिर्फ उनके scores देख रहे हो, you're not actually seeing their struggles or their actual मेहनत, you're not seeing any of those, right? So stop comparing yourselves with others. If you want, maybe learn from them. Toppers से बात करके you can take their advice, seek their advice and use it for your own good, but doesn't mean कि तुम अपने को कंपेयर करके डीमोटिवेट करके वो सारी चीज़ें छोड़ रहे हो कि मुझसे नहीं हो रहा है, बाकी सबसे हो रहा है। Subscribe for more honest NEET content that nobody talks about. Like this video if you've been through the NEET struggle too. NCERT is more powerful than you think. इनफैक्ट मैं भी सोचती थी, मैं बहुत सारे सीनियर से बात करी थी, उन्होंने भी मुझे ये बोला था कि ओनली फोकस ऑन NCERT, कुछ बाहर से नहीं आता है। नीट का पेपर मेजरली NCERT बेस्ड होता है, बट आई स्टिल चोज टू नॉट बिलीव देम एंड आई स्टिल सॉल्व्ड माई कोचिंग के मॉड्यूल्स and I used all of it, but at the end जब NEET 26 हुआ था, the paper was completely NCERT based and it was really easy, ठीक है। So biology and chemistry I'll definitely suggest NCERT एकदम अच्छे से रट लो। बायो की तो विद टाइम विथ रिविजन्स ईजिली रट जाती है, बट केमिस्ट्री की स्पेशली आई से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डायरेक्ट स्टेटमेंट्स असर्शन रीज़न के फॉर्म में बहुत कंफ्यूजिंग बन जाते हैं। इफ़ यू नॉट श्योर अबाउट इट, इफ़ यू डोंट रिमेंबर इट करेक्टली, तुम्हारे आराम से -5 हो जाते हैं। तो NCERT को कम मत समझो। मॉड्यूल्स भले ही तुम कर रहे हो, बिकॉज मॉड्यूल्स एंड लेक्चर्स आर नीडेड फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एंड ऑल्सो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो एक माइंड सेट होना चाहिए ऑफ दैट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला। सो फॉर दैट मॉड्यूल्स आर ग्रेट, बट इफ़ यू वांट लास्ट मिनट रिविजन्स, ऑलवेज डू इट फ्रॉम NCERT। इनफैक्ट केमिस्ट्री की NCERT अगर तुमने नहीं पढ़नी शुरू करी है, देर आर यूट्यूब चैनल जहाँ से यू कैन स्टार्ट डूइंग इट एंड स्टार्ट लर्निंग इट, बिकॉज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में असर्शन रीजन्स फ्रॉम NCERT ही आते हैं। सो डू इट फ्रॉम NCERT एंड NCERT को भगवान ही मान लो फिर एटलीस्ट नीट के पेपर के लिए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। इनफैक्ट मैंने नहीं मानी थी ये चीज़ें जब मैंने अपने कुछ सीनियर से बात करी थी, तो इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ कि डू इट so that you don't regret it later maybe. So before jumping to any other resource, any other modules, lectures or whatever, master that one resource that NTA actually does, and that's your NCERT. Consistency beats motivation every single time. ये इंटरनेट पे आगे सबसे बड़ा झूठ है कि यू जस्ट नीड मोटिवेशन। आई डोंट थिंक सो। मोटिवेशन डिसअपियर्स लिटरली। तुम हर रोज़ जब सुबह उठते हो, यू डोंट फील मोटिवेटेड एंड देर आर लिटरली डेज वेर यू जस्ट फील लाइक टू गिव अप। बट अगर तुम्हारा प्रेपरेशन सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंडेंट रहेगा, देन ब्रो यू आर इन ट्रबल। जो एक्चुअली चीज़ विच मैटर्स दैट्स डिसिप्लिन। तो इवन तो अगर तुम rather than studying for 1 घंटा, मतलब एक दिन विथ फुल मोटिवेशन तुम एक दिन 14 घंटे पढ़ रहे हो एंड नेक्स्ट पूरा हफ्ता तुम्हारा कुछ नहीं पढ़ रहे हो एंड तुम खाली जाने दे रहे हो उस पूरे हफ्ते को, देन दैट्स नॉट रियली गुड। आई मीन आई वुड से कि स्टडी फॉर 4 फोकस्ड आवर्स एवरी सिंगल डे, और अगर 4 भी नहीं हो रहा तो एटलीस्ट 2 घंटे तो रोज़ आई गेस बन ही जाते हैं। तो 2 घंटे फोकस्ड एवरी डे पढ़ो rather than studying for 14 hours once in a week, ठीक है। आई नो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी बोरिंग, बट कंसिस्टेंसी ही एक ऐसी चीज़ है that can get you that great rank that everybody wants. So yeah, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. And if you want to know what actually helped me study smarter and improve my score, watch this video next.